Assalamu alaikum. Straight Talk, Nadeem Naik Straight Talk, a segment of Radio Birthdays. Thank you so much for joining and listening to this one of a kind show on the airwaves of 99.5 FM. Studio line 713-974-4000. Thank you so much for joining wherever you are. Don't you go away and don't you dare touch the dial. What is Straight Talk? Exhilarating, captivating, gyrating, and something new all the time. Cutting edge of thoughts and processes, bringing everyone together so that we can all come together, stay together, and pray together. For one sole objective, to make the world better than ever before. And this is Straight Talk. अपने loved ones को कह दीजिए, don't you go away anywhere. This is the spot we meet, your weekend love, bringing you everything what you need to know. Something which will improve the lives. और सबसे बड़ी बात, I try to share new ideas. You may already have these here, but let's say I give you another fresh look on those here. So very optimist view of life, making everything better for all of us. Love should prevail all the time. And I'm live on YouTube as well. So thank you so much. Let all the loved ones know that there is nothing out there. Attitude adjustment के लिए the right place to be, and brutally honest and facts up and up. इसीलिए तो मैं कहता हूँ, come on, let's join it and make things happen. First thing first, the heart, where my heart weeps, and look forward to a very bright future of the Kashmiris. Indian occupied Kashmir, Saab. Prime Minister Modi, you are known as the butcher of Kashmiris. Enough is enough, brother. Enough is enough. We got to put things in the proper perspective. Nowhere, not I have heard or read, while I was having a discussion yesterday with some of our Indian callers here, and I proposed, has never been looked at and even discussed at like this, that Kashmir, Indian occupied Kashmir, to bring peace in the region, because it is a very scary flashpoint. Both countries are nuclear, Pakistan and India. And let's not kid on this matter here. As the population is going to be off the charts, and it is already happening in both the countries, Prime Minister Modi, take heed. The future is always very uncertain and very unpredictable. Look at the good old USA. After 18 years in Afghanistan, time to pack up. We should have, as honestly speaking, packed up a long time ago. But there are a lot of things there which most of you will know what truly is always happening. That why we do certain things. And of course, America has vital interest, and we were there to protect it. And we feel like at this time, the game changer is that let's get out of it. Of course, we will never completely will, and we should not. That's my personal view, but I'm not, the president of USA. Now, what does that mean for the peace in the region? Why is Trump insisting, the prime minister, the elected prime minister of Pakistan, Imran Khan, why is he seeking the help of Pakistan in this matter of settling and bringing peace in Afghanistan with the Taliban? These are the same Talibans who have been beaten to pulp, but they keep popping up because they are very resilient people. Mr. Modi, why I'm all discussing this here? That once the peace prevail over there, just imagine, they were the same origin, those Pathans of that tribal area, which adjoins Pakistan and Afghanistan. And it's a seamless border between the two countries. Although we have an 1,800 miles of border on that side of Pakistan. They were the ones who took liberty at the time and tried to run amok and take over as much Kashmir they could. Now just imagine, look, and I'm sure you have considered this also. This is not something, I'm putting this out because some people may not think it from that angle. And they may already have, and I'm just shining more light on the subject. What if
Then they get settle their own disputes in Afghanistan, and now they have a breather time. And then all of they feel like, oh, we have Muslims, brother, in that where they are suffering. And what if they all kick up a storm? Things will get out of hand. Once the things they get uncorked, it's very hard to put the genie back in the bottle. Mr. Modi, I know you're in the election mode. And I will, not me alone, but world over, and Pakistanis are expecting that you are going to, stir some trouble with Pakistan and create some kind of a war-like, you may go on that tangent and kick up at least if not in action, but maybe, who knows, and maybe then be, verbally assaulting. That will not still solve the problems. What we have done since August 14, 1947, Mr. Modi, we have only procrastinated and pushed and kicked the ball down the road. Now, that can which you've been kicking, both of you, the Pakistan and India, if the results are disastrous. We are creating monsters. I'm saying it plurally, meaning that population on both sides who are totally naive on the subject. They don't even have the concept that what is when people band together, how they form a country. They don't have the basic rudimentary understanding of how the countries are formed. And who says we have to keep people against their will? That's slavery. Yes, Prime Minister Modi, the people of occupied Kashmir by India, are slaves. It is a new form of slavery. Nobody have told you that. I'm telling you in your face. It is slavery. It's a form of slavery. When you restrict the people, when they want to move freely, they want to do things their way, and you come in and become a slaughterhouse, and that's why you're known as a butcher of Kashmir. That's modern day slavery. I know nobody has said that, but understand this. Practically, that's happening. And this is when I speak on the air here, and then being also on YouTube as well. This is an audio book and will stay there. And the world will listen and hear more and more. Because they will say that Nadeem Naik is promoting peace and finding solution to that problem so that both the countries can grow phenomenally. Exponentially, we can both grow in terms of betterment of the lot of the people. You are getting to be over 1+ billion. And Pakistan is heading in a similar direction of more people on the land. Imagine when people will simply run over and take matters in the hand. That's what happened. And by the way, what is the concept of Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah? What were they doing at that time? Was that not the struggle to have liberty of how the people wanted it? What was wrong? Governments are run right. If you say that India has been run right, I don't know about that, but I can tell you about Pakistan, a disaster. So government can be run by anybody. So if English were there, or the Mughal Empire was there, and before that, princely states or wherever the conquerors would come into India, they were running it. Alexander the Great came in there. I don't know what makes Alexander the Great, except he was also, I would say, a rubbish warrior. But that was I will not judge history, but they were basically looters and plunderers of the time. But that was a way of life back then. So I'm not judging history. The point I'm making here, Mr. Modi, that we are getting into things where we need to understand in the right perspective. So if English were running this India at that time, so what was the problem then? If you think that was a problem and we needed independence, then the same logic applies on the Indian occupied Kashmir.
And the solution, I kept my solution because I wanted to hear, I wanted to talk with you live. I wanted to have people to listen to you when we will sit in a session where we have a question answer session. That I ask you a question, you give me an answer, you ask me a question, and I give you an answer, so the world at large can listen to it. What's the point here, Mr. Modi? To bring peace in the region. Wake up. You've been under the rock and getting the people slaughtered. Why don't you, with your all colorful rock star robe, the way you dress, I have no problem with that. Why don't you go into Kashmir yourself and start living over there and live the life of those Kashmiris who are insulted, who are injured, who are murdered, and that's why you should be tried in the International Court of Justice as a war criminal. Human right violation simply puts you behind the bars, Mr. Modi. How can you be so callous that you see the suffering of Kashmiris day in and day out? And what did I propose? The best solution, and it will make even life better for all the people. Not only just for the Kashmiris, but for Pakistan and India as well. Make the occupied Indian Kashmir as an autonomous region. Trust me, nobody has said that, and nobody there will tell you, because each party thinks that we need to get more from the other. That's bloody nonsense. It has not worked. You know it. It has not worked. Everybody knows that this is not work. And our esteemed callers who were calling me yesterday from the Indian side, since they introduced by their names and by their style of their point of view, all they were pointing fingers at each other. For what? That's childish. This has been going on for how many years now? Since August 14, 1947. It's an insult to the people of India and Pakistan that we cannot sort out this, a very simple thing. It is honestly a very simple thing. There is no complexity about it. This is not an albatross we need to put on our around our necks. And this sword of Damocles, which is hanging over the Kashmir issue on those both countries, Pakistan and India, is ridiculous. It's the pettiness. It's of the puny minds that we think, oh, Pakistan does something wrong, that's why something is happening in Kashmir. Nonsense. And let's play again the devil's advocate from your Indian side. Let's say Pakistan does that. You are lucky, Prime Minister Modi, that India sent their forces to liberate Bangladesh, East Pakistan into Bangladesh. Pakistan has never done that. And I'm not justifying the act that if Pakistan does it or doing it, absolutely not. Because at the end of the day, people get killed. Your people, human life, is as precious as anyone on planet Earth. I'm a man of peace and love. So you make occupied Indian Kashmir as autonomous region to begin with. And let me throw another thing for you. Make it even sweeter for you, this deal of autonomous region of the Indian occupied Kashmir. I tell you what you can do. And we can all work together on this here. Pakistan and India, once you say that now Kashmir is an autonomous region, and Pakistan dare not jump into it, let's have outsiders. But China, considering this Pakistan close ally and I don't know how good a friend, but a friend, right? And so you will say, hey, we cannot take China as a guarantee. Fine, I will go along with that. I have no issues. Why not we bring in the NATO there? In what sense? That this contract of India making an autonomous region of the Indian occupied Kashmir to begin with, because I don't want to see the division of the Kashmir you are holding. Like it was, one of the callers said that this was also discussed, that this percentage of population lives in that, and it was considered like this. No. Kashmir is Kashmir, whether held by Pakistan. Well, technically Pakistan don't hold it because they have their own life over there. And but on the Indian side, it is a big mess. So let's, on the Indian occupied Kashmir, just to show you goodwill, just to show you that you're bigger than life, than even from Pakistan. My Pakistani friends will not love to what I just said. They heard it.
But in order to bring peace, one has to do unusual things. Who has challenged you like this the way I do? It is not the regular thing, right? This is modern way of approaching things. So I'm asking you directly. I'm a concerned citizen, and I am concerned that a very simple matter has boiled to a degree where it is creating a havoc on people's emotion. My Indian callers yesterday, they were totally perturbed. They were like popcorns. They were like they're going to attack me verbally. Uh, they're not trying, they did it. But that's not where the solution is. The solution is that now you make an autonomous region. NATO signs over that agreement that NATO have forces, that if Pakistan ever indulges in taking over Kashmir, that they should come in. Pakistan is not like this. Mr. Modi, just listen to me. I'm going out on a limb on saying this, but I know what I'm saying, and I believe in my heart, for deepest thinking and my full heart into this here. Bomb the heck out of Pakistan if Pakistan forces dare or any other good dares go into the Kashmir, which you just made autonomous region. They should, because we need to have peace. Pakistan does not need more land. Pakistan does not need more people. People should, feel to move about freely. And what the side which Pakistan has, then let the Kashmiris decide, both sides, that they can take the border out, and it will be fine. We can have a united Kashmir. Look how far I have gone in this thing here. If you guys look at all the Indian callers and think, forget the callers for a moment. I don't want to bash them because it's quite okay. I respect the callers. But I was making a larger point here. And the point is that let the people, however they want to live in peace, harmony, love, and friendship. They should decide. Who are we to decide for them? Kashmiris have been struggling. Don't you think the Kashmir which Pakistan has and the Kashmir you had, they have relatives across the borders. They have been suffering. It's a rape of the people of Kashmir on both sides. So there, one day I like to even see a united Kashmir. So I didn't want it to go that far because I can see the future. My vision is that it will happen that way, and it should happen that way. That it should become a united Kashmir. Nothing to do with Pakistan and India. Nothing. Yes, we can add it in there that Kashmir, just for the sake of peace, just like when America defeated Japan and said you cannot have armed forces. We can also say that Kashmir will never have armed forces. Yes, quite okay. And what do they need those arms for? For what? Let's get all mature. Let's become more sensible. Let's look at things with a good heart. All this effort I've been making, and I will continue to make so, in order to bring Kashmir and give them dignity of life. The Kashmir should be for Kashmiris. That doesn't mean that nobody else can be there, but meaning that they have been struggling all along to have a life of their own. So, Prime Minister Modi, I will not give up this subject. I'll continue to do as along. I may not be on the air or off the radio airwaves, but I would start a podcast and I will be on YouTube and I will be still hammering it away. And I'm going to protest outside your Indian consulates and encourage people all over the world to do the same. That is not going to stop. As long as I live, and even if I'm the only one, I don't care, because I have, like this, I've taken a stand. I take stands in my life. I have done it in the past. I'll continue to do the same. But I firmly believe which is in the good of the people. So I ask you, Mr. Modi, take a look at it. My proposal is very humble and very practical. I would like your views on it. Should you ever like to write me up, your Indian consulate has my email address and I'll give it to you, nadeemnaik@hotmail.com. How about that? It's hot. nadeemnaik@hotmail.com. And I'm going to tweet you. I'm going to be this week working and I'll see how I can contact you personally myself.
I haven't done it so far, but I will. When I tell you I'm going to do something, I do it. And I hope I wrote a letter to your Indian consulate here, to the consul general here, Mr. Modi, and I expect an answer from him. Either way, whatever he wants to say, yes or no, or whenever, it is okay with me. But I would like to have an answer. It's decency. Now, that I end with there, and I'll pick up this subject. I hope by next week you resolve this. We can move on. To me, when someone cannot take off some business, that goes to show their IQ. I practically not judge, evaluate things in that sense. I'm not judge of others. And Mr. Modi, I love you, man. Let's make peace for Kashmiris, like you and I enjoy. And how about that this Indian gang of Open Forum? Invite me at your radio, and I have already given you an invitation to be on Straight Talk. Thanks to Moin Pirzada, this Straight Talk you hear is a segment of Radio Pradesh. 10:30 to 12, Saturday and Sunday nights. So, my friends, so these the gang of Open Forum, which plays out on another radio station here in Houston, I will invite me to your place. You can reach me, Nadeem Naik, at hotmail.com, and my number is 832-876-2392. The number again for you, gang of Open Forum, 832-876-2392. Now, if you didn't jot it down, no worries. YouTube is available for you to pick it up from there. That is live, never edited. Now, that's called a man of conviction, right? Okay, now I'm done with that aspect of it. Let's move on to what's happening in Pakistan. Well, before I move to Pakistan, how about I take care of Mr. Trump? Oh, you guys must love him. He is one of a kind. There is no, I said about Mr. Trump, I asked my friends, that he's going to be the best and the worst president of America. One day I will give you my definition, how I have said it, and what do I mean by that. So for now, what happened on Wall, Mr. Trump? Come on, guy. Yes, you are a president, but you don't have to act childish, Mr. Trump. Wall is a medieval thing. Look at the Great Wall of China. What do you think about that? And then, if I was to hold your feet to the fire, and you say, if you are a man of your words, Mr. Trump, then you were going to make Mexico pay for the wall, right? What happened there? So instead of holding Americans as hostage, and by the way, and I'm sure, some of you may be federal employees and some may not be, that's okay. But you keep hearing on all the stations and all the news media and everywhere else as well, 800,000 people have been, furloughed, and they don't have the money for the paycheck. And this is what's going on with their life. And it is coming to that point that they have to, and you're Wilbur Ross. Oh, come on, guy. That guy is nuts. The secretary of this guy. Boy, just because he's a billionaire and he says that you can go ahead and take a loan, what's a big deal? Yes, it's a big deal. Why should one take a loan? And loan against what? What if you say, okay, now that we know that we really may not need that many people, and you just divorce them, you fire them. So the person who will extend them the loan, they don't want to holding a bag for what? Why should even somebody loan? And then on top of that, even if somebody takes out a loan against the paycheck you're talking about, Wilbur Ross, then why should they pay the interest on it? Are you going to pay for the interest as well? Come on, guy, let's get serious. Grow up. So now here, look at this, Mr. Trump. Now, it was not 800,000 people, Mr. Trump. Nancy Pelosi and others are talking also. They are not. Congress, Senate, and you, Mr. President, held 335 million Americans as hostage. All the three.
The Congress, the Senate, and you, Mr. President, yourself. Yes, those may be directly affected. I'm using that word very sheepishly. The reason those are directly, the word directly, because they were not getting the paycheck. But what about us? We couldn't fly safe planes. And what about if I was on a vacation and I wanted to go to Smithsonian, and my purpose of taking a vacation over there in Washington, D.C. was to go there. I spent all that money and did not go to see. I may have a tickets already bought. And then I may not go back in next 5, 10 years, or maybe never. So I lost. We all suffered. So it was not 800,000 people don't understand things in a larger perspective. We, the people, we, the Americans, we suffered. And you are a deal maker, right? So what happened to your deal? What about you were known as the best guy on the table with who can with the slay of hands can conquer all? It didn't happen that way, Mr. Trump. Let us wake up. We all suffer, and there's no need to. It's a shame. Oh, we are going to have someone calling us right now. My friend, you are on the air. Welcome aboard. Mr. Nadeem Naik, this is Shamim speaking. You mentioned 350 million suffered. Actually, the federal workers, the correct amount is 4 million and only suffered 800,000. And they didn't even suffer all the way in Homeland Security. The main branches, they are supposed to get their paychecks. They didn't mention it. And 800,000 people, they suffered for what, 27 days? But the war is necessary. 34 days, my friend. Now let's break it down what you just said. First of all, did you hear me? Every politician, Nancy Pelosi has a mansion in California. She has a big wall. Even Maxine Waters, she is from the 46th district of California. And look at her district. She's horrible, poor people. Most of the homeless live in the community. She has a big mansion. She has a huge wall too. Everybody tries to protect their family and the kids from the sun. Look, we are Indian, Pakistani, and Bangladeshis. How many people come in here? Not too much, because we have to fly. And our also, we have to be suffer for these people. These funds come from South Guatemala, Honduras, Salvador, where most of the gangs are. What they do, they come here, they don't do nothing. Some of them all only few percent, maybe 0.000% wash the dishes and do the landscaping. Most of them sell drugs because you are not in the street. Okay. Now there is a listen. Hello. Thank you. All right. Take a deep. 100%. Okay, all right. I will try to understand, because I don't know what you're saying. So I will ask you questions so that I understand, and maybe for the betterment of our good listeners as well. Let's go down with the numbers here first. You labeled something. You don't have proof that. Let me start with the last thing you said, that these guys, and you came up with some percentage. I don't know where was that, a figment of your imagination, that only that many work and the rest bring in drugs. Do you have a proof? And you can quote me a website right now where you have read it yourself. I can pull it up here. Mr. Naik, 7.5 years, I'm working with the police department. And what does that mean? What figures are you using, my friend? They do day-to-day operation. What they do, they sell federal drugs everywhere in the street, everywhere in Houston, every part. All right, let me ask you this. Are you a cop here in Houston? I'm sorry? Are you a cop? I'm not a police officer. I work with the police department. All right. In what capacity? I'm not going to disclose what I do. Oh man, you can say you are undercover, or you can say you work with the drug department. What's the big deal? What is that a secret? So I don't know. I'm just telling you what they do. All right, forget it. Okay, let's move on. They come back in 3 days. Okay, let's move. Okay, all right. So vulnerable, you deport them, they come back in 3 days. Oh, of course, they will. And people will, because they will. If they find gold, they will come back. But let's stop right here. You made another point here. You said
since you work some kind of business with the police department or security or whatever, how do you know? Do you know there is a survey conducted only in Texas and nowhere else? Do you know what that survey was about? Huh? Listen, all these surveys, all these several bodies. Oh, stop right here, please. Don't talk, please. Don't. Brother, Okay, don't label things. Hold on, partner. Let's have a dialogue. do you have a wall or not? Okay. Let's build a wall. Wall or not in your property in Pakistan? Your family lives or whoever lives. I have the same wall. I have the same wall which Obama has. Okay, where are we going with this here? My friend, my friend, take a deep breath here. Let's talk where you can make sense with me. I'm not saying you are totally nonsense what you're saying, but I want to break it down. You're saying too many things, so let me sort out the ones which you have already said. So He's doing something real. At least try to build up wall, you know? Let something start. Nobody will do it. Everybody loves cheap labor. okay, all right. I'm going to. You're not going off the air, but I'm going to. You please quietly listen because you said so many things, and I want to understand. Okay. The survey, you didn't even hear me out what the latest survey I was referring to. And you, with your preconceived notions of whatever coming in your head, you are saying it without even knowing what the research is about, who conducted it, and what does that research really saying. And even the nationwide figures are not supporting your argument that these are the people who are making a mess. So I don't know what world are you living in. And let's talk about the wall now. What is have to do this here that I have a wall around my house and wall somewhere? My friend, there are better ways. You didn't mention what are you doing with the security or with the police here in town. Now, since you said you are not a cop, so you are not carrying an open badge where someone can identify or a uniform that you are such a such person. So there are such methods, and most sophisticated implements are there right now. The tools are available that this can be, in some form and fashion, can be used where we can protect the so-called borders here. Your argument, I go back on that these Hispanics coming in is very derogatory, and that wasn't nice. Now we have another caller, so I'll let you go and let me take this caller on, and I will continue to say what you were saying here. All right, my friend, you're coming on air. Welcome to Straight Talk. You're on air, my friend. Yeah, it's a pleasure to be on your show. Thank you. You're very kind. Go ahead, my friend. Actually, the gentleman was earlier. I respect him. I respect his thoughts and everything. But at the same token, I have to say, because he just mentioned, they just come here, they just do landscaping and everything. If you go to any restaurant, if you go to any services, you don't see nothing but. And my understanding, I think he was from Bangladesh, but whatever he was saying, actually, I think he just got offended because you said something about Modi or someone, but he didn't make any sense at all. Thank you, my friend. Thank you so much for calling in. Because see, the humanity is the number one religion on this earth. God bless you. And if you're not a good human and you disrespect humans like this on this media, which is, I mean, very disrespectful for humanity.
And you can tell these kind of people when they come on air and they disrespect humans like that. I mean, all I have to say, whatever Mr. Trump is doing is good for him, good for his followers, and all my friends are listening right now. But humanity, once you disrespect humanity, you don't belong to any religion on this earth. That's all I have to say. Thank you so much, my friend. God bless you. All right. All right. Let's move on with this here. Interesting. Sahab, that's why I say, oh, I got have a sip of water here. Alhamdulillah. Let's flush our bodies so that we get fresh oxygen in our brains as well. And that gives us a good pause also to take a breath and think about things more positively. Yes, we have to protect the country, no question about that. Look at this here. So are you saying someone who makes an argument that Mr. Trump is right about the wall? Well, first of all, Americans should not be penalized because he said his promise was that he's going to build a wall and Mexico is going to pay for it. So that ends the discussion right there. Anyone who wants to support him after that, you have to be totally full of you know what. Now, we want to protect the country. We want people to live here a decent life. They are Republican senators. They didn't do anything about it. They are Republican congressmen. They didn't do anything about it. They don't agree with their own president or the Republican Party. Because the wall, it is a wall of imagination. We can toughen up our laws here that we don't want anybody more. Okay, fine. That's the mood of the prevailing mood right now in the country. Okay. 10 years down the road, 30 years down the road, we'll say, oh, we are opening up the borders. Things change all the time. All right. For now, if the movement and as they say, the wind is blowing in that direction, okay, no problem. Yes, people who will, like us, will say, wait a minute, guy, there should be some ways and we should have some standards. I can go along with that. And Nancy Pelosi said, we will use 5.7 billion, but not for the wall, which is a brick mortar or even call it the steel wall. So where are we going with this here? Nowhere. And as a president, let us find more creative ways of getting that money. Even from America, you're broken already your promise, Mr. Trump. Maybe tomorrow you may convince Mexico while you're still in power. Yeah, it may, who's to say that may not happen, but it's not likely. So now coming back to the reality here, 300, the exact figure of Americans, which I am saying is 325.7 million Americans held hostage. 35 days. And who knows what will happen again. My goodness. And I would definitely encourage Senator Ted Cruz really got a good thrashing from the Colorado Senator, Michael Bennet. And he put him in his place, and that's available also on YouTube. So do take a look on that about this issue here. अच्छा साहब आप आइए कि ये जो मैं हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और मैं हूं शेडो प्राइम मिनिस्टर नदीम नाइक. आई नो दैट इट इज कैचिंग अप विद पीपल हियर कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आइडिया क्या है, इसमें इंपावर लोगों को किस तरह मैं कर रहा हूं. इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अब डेवलप हो गया. यू विल लव इट. मैं आप लोगों के साथ कंसेप्चुअली बातें कर रहा होता हूं और इस स्केल पे कर रहा होता हूं कि बिकॉज आई नो दैट दिस इज very likely how things can pan out. अब आपको very interesting, if you're keeping up with what's happening in Venezuela, आप उसमें देखें साहब वहां पे क्या हुआ है. बात मजा आया ना साहब. मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है शेडो प्राइम मिनिस्टर का, भाई साहब वहां पे मडोरो जिसको अब हम उसके साथ अमेरिकन के किस तरह लताड़ते हैं, अब हिस्ट्री इसका भी एक रिकॉर्ड करेगी कि किस तरह उसका तमाशा बनाया जाता है. वेनेजुएला में ऑपोजिशन लीडर है
हुआन अगायडो, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट, और उसने ओथ क्या लिया है, वेनेजुएला, बिफोर गॉड ऑलमाइटी आई स्वेयर to formally adopt the powers of the national executive authority as the president in charge of Venezuela, to stop the usurpation of power, the transitional government, and organizing free election. And he's 35 years old. साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा था, ये तो भी हुआ ना, जुमा इसको कितने दिन हुए, अभी इसी हफ्ते इसने अपने आप को डिक्लेयर, और मैं जब आपसे कहता हूं कि मैं आपका शेडो प्राइम मिनिस्टर, जो कि नेवर happened in Pakistan history, conceptually मैंने कहां पे लोगों को मैं प्लेस कर रहा था, अब ये बन गया ना, look at that. वो ऑपोजिशन का वो असेंबली, मैं आपसे कह रहा हूं, अब कितने अरसे से मैं कह रहा हूं, मुझे आप एक दफा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भेजें सब, फिर वॉच मी गो। ये आप अभी मेरे, यू जस्ट हैव अ लिटिल फ्लेवर ऑफ स्ट्रेट टॉक। इमेजिन व्हेन आई एम इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, हमारे ग्रेट स्पॉन्सर्स ऑफ रेडियो प्रदेश आर स्टर्लिंग, मकॉल, टोयोटा, शाहिद उस्मानी 713270 3900, Gulshan Sweets 713-772-7860, Gulshan Sweets. Awesome Travel Sabah 832-742-4444. Be awesome. Call Sabah. Awesome Travel. 832-742-4444. Affordable fine furniture, only one gentleman who can provide. Fahim Khan 713-450-0025. Fahim Khan, affordable fine furniture 713-450-0025. Free gift from him as well. Bawa Jewelers 713-952-5858. 713-952-5858. Chathara Grill, Amir 281-988-7141. Chathara Grill 281-988-7141. Mumtaz Zaman Insurance, Mumtaz Zaman, the man, the insurance man. 281-313-6160. 281-313-6160. And US Wholesalers, free gift coming to you guys. US Wholesalers, 8080 Harvin Pay. जाइए, अकाउंट खोलिए, get a free gift. US Wholesalers, 8080-8080 Harvin. Thank you so much. You're listening Straight Talk, Nadeem Naik Straight Talk, a segment of Radio Pradesh. Thank you so much. I love you guys. That's why I come here. All right. So साहब, ये shadow prime minister तो भी prime minister नहीं बना, मगर एक opposition में बैठा हुआ. Although I don't like the word opposition, you have heard me saying it many times. Go visit my old YouTube programs. And वो opposition में assembly में था वहाँ पे, और उसने कहा दिया जी मैं interim president हूँ. कर लो बात साहब नदीम नाइक को भी जरा देखिए, जब नेशनल असेंबली में रब ने ये चांस दिया तो फिर I'll show it to you. All right. हाँ साहब, आ जाइए अब इस तरफ. पहले जरा क्रिकेट के ऊपर, ये जो है ना पाकिस्तान का कैप्टन सरफराज अहमद, he should have been taken off the cricket rolls once for all, and he should have been ashamed of what he said. पाकिस्तान का जो कैप्टन है सरफराज अहमद, जिसने अभी थर्ड वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो फ्राइडे पे हुआ था उसमें खेला, और उसमें उसने allegedly racist comment सेकंड गेम में दी है. सरफराज ने apologize किया, that is decency on his part, but that still doesn't mean that he should have been kept on that. Pakistan should set new standards. Pakistan should show that we mean better Pakistan. Forget the Naya Pakistan BS. ये सुनिए जरा, उर्दू में सरफराज was caught on the stump microphone. Stumps पे भी माइक्रोफोन लगे हुए साहब, हम तो सुनते थे ना कि दीवारों के भी कान होते हैं. ये इन भाई साहब को बता देना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं, जो अभी कॉल कर रहे थे. तो भाई साहब ये जो स्टंप्स पे माइक्रोफोन, ऑलराइट, उस पे कहते सुना गया है ये कैप्टन सरफराज ऑफ पाकिस्तान टीम, हे, और उसने कहा उर्दू में है, हे ब्लैक मैन. आपको पता ना कि उर्दू में किस तरह कहते हैं, ओ काला आदमी, समझ गए हो ना आप? That's downright racist. तो कहता है, हे ब्लैक मैन, where is your mother sitting today? What? Prayer
have you got her to say for you today? اب انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو بھی کرے, پاکستان کو اس سے پہلے سرفراز کو کر دینا چاہیے تھی کیا, چھٹی. شرم نہیں آئی سرفراز کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, اس نے بلڈی نان سینس ریسے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا صاحب, عمران خان. آپ کہیں گے عمران خان کا اس میں کیا قصور ہے, وہ بدتمیز شخص ہے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں وہ بدتمیز شخص ہے. وہ اپنے, مجھے اندرون خانہ خبر ملی ہے ان کی, وہ جو ان کے جو ملتے ہیں پارٹی ممبرس ملتے ہیں اس میں عمران خان کے ساتھ, مجھے اندرون خانہ خبر ہے, اور میں ویسے تو میں بہت دیر سے آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا, میں کنفرم اس ویک بھی مجھے ہوا ہے کہ وہ اندر انکریج کرتا ہے کہ آپ جو اس کے منسٹرز ہیں کہ ان کو بیک فٹ پہ, یہ اسی قسم کے الفاظ عمران خان نے یوز کیے. ابھی تک اس کی کرکٹ مینٹالٹی نہیں گئی, وہ بھی میں ابھی اس کی ایک سپیچ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. اسے کیپٹن کون ہے, اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. بیوقوف, ہاف بیک مین. یس آئی ایم سیئنگ اٹ اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر آئی ایم سیئنگ اٹ, اینڈ آئی ول ٹیل یو ویئر دی سپورٹرز آف عمران خان بلانگ. ابھی میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو صاحب اب یہ سنیے, عمران خان نے اپنے اس میں کہہ رہا ہے میٹنگ میں اپنے, یہ جب ملتا ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, کہتا ہے کہ ان کی جا کر بالکل بے عزتی کرو اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت. مجھے آئی نیو اٹ آل along, اور آپ کو میں نے وہ بھی کلپ سنایا تھا, میں دوبارہ سناتا رہوں گا کہ عمران خان پاکستان کو ایک بدتمیز قوم بنا رہا ہے. وہ خود بدتمیز شخص ہے اور وہ آگے قوم کو بھی بدتمیز بنا رہا ہے. اس کے وہ فواد چودھری نے کہا ہے, از آن ون آف دا ٹی وی شوز, کہ کہہ رہا تھا کہ میں تو جو بات بھی کرتا ہوں مجھے عمران خان کہتا ہے جس دن کہنا چھوڑ دے گا میں بھی ایسی بات کرنا چھوڑ دوں گا. تو بیوقوف, تو اپنی وہ فیتا لگوائے گا منسٹر کی خاطر, تو جو گدھا تجھے وہ کہے گا تو گدھا ہے فواد چودھری. عمران خان تیری بدتمیزی کی وجہ سے سرفراز نے بدتمیزی کی ہے. اگر تو اس نے عمران خان تو نے سٹینڈرڈ ہائی سیٹ کیے ہوتے تو یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے تھی. ساری قوم آن الرٹ آ جائے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اس کا دوسرے شخص کے ساتھ ہم کریکٹر اسیسینیشن نہیں کریں گے. یہ بیسک ہے. And Imran Khan, your bloody nonsense thing of ریاست مدینہ کو نہ نام لے خدا کے لیے. And you better stop. Somebody needs to sue him on that. I tell you why. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے لوگ, یا میں کیا آپ کمپیئر کروں, مسلمان تو صاحب جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی کہ وہ کوئی ایسی غلط بات کریں گے جس سے پورا اسلام اس وقت کا زلزلے میں آ سکتا تھا. صاحب یہ ایکسپلائٹر ہے. عمران خان پاکستان کی ہسٹری میں پہلے آپ کو بہت عرصے سے وارن کرتا رہا ہوں کہ یہ ہاف بیک مین ہے. یہ نہایت ہی سیلفش انسان بھی ہے. اس نے پرائم منسٹر بننے کے لیے سیاسی رشوت دی ہے. اپوزیشن اس کے تو اپنے ووٹ نہیں نہ بن رہے تھے, سمپل میجورٹی بھی نہیں بن رہی تھی, تو کولیشن گورنمنٹ کو جو باقی اس نے پولیٹیشین اکٹھے کیے ان کو اس نے سیاسی رشوت دی منسٹر بن کر تاکہ یہ اپنے یہ پرائم منسٹر بن سکے. یہ سیلفش انسان ہے. یہ سیلفش لوگ ایسے کام کرتے ہیں. 1 نمبر 2 سنیے, اس نے یاد کریں اس کے الفاظ, کہتا ہے کہ مجھے وہ اپنا جو 62(1)(f) ہے کہ انسان کو صادق اور امین ہونا چاہیے, اس نے وہ سٹینڈرڈ کو گرا دیا اور کہا مجھے الیکٹیبلز چاہیے. یہ ہے عمران خان. اور پتہ ہے پارٹی سپورٹرز اور عمران خان کے ہیرو ورشپرز, شیم آن یو گائز. اور یہ بھی بتا دوں, یہ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں نا, یہ بھی اتنے ہی گندے ہیں, بھلے ان کی پوسٹ ان کو تغمے ملے نہ ہو, ہیوسٹن میں ہو, امریکہ میں ہو, کہیں پاکستان میں ہو, دنیا بھر میں ہو, وہ سب بدتمیز لوگ ہیں, بد اخلاق لوگ ہیں. ورنہ اس کو عمران خان کو وہ لگام نہ ڈالیں. اور اگر عمران خان کو سپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں اس کی بدتمیزیوں پر, اور جرت نہیں رکھتے کہ اس جیسے فورم پہ جو میرا یہ ہے اسٹریٹ ٹاک آ کے کنڈیم کریں کہ وہ بی ایس کرتا ہے عمران خان, اس کا مطلب ہے کہ تم سارے اس جیسے اتنے ہی عزت کے قابل نہیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو کوئی مذاق ہے؟ پاکستان کوئی کرکٹ کا میچ کھیل رہا ہے؟ بدتمیز شخصوں. یہ وہ شخص ہے جو قانون کو عمران خان نے توڑتا تھا پہلے, اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو قانون توڑنے کی وجہ سے یہ جتنے جو اس کو نیب کے کیسز ہیں,
وہ جو شوگر مل کے کیسز کھلنے ہیں اور وہ جو پیسوں کی وہ جو منی لانڈرنگ کا ہے, ان میں یہ سب لوگ جن کو نیب پکڑنا چاہتی ہے, میری آج کی بات آن ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ سب چھوٹ جائیں گے. اور میں آپ کو ریزن دینے لگا, یہ صرف عمران خان کی وجہ سے. میری بات آج کی میرے ہم وطنوں, میری بات کو غور سے سنو. میں آپ کو آج تک جو باتیں کہتا آ رہا ہوں, آپ اسٹیٹ ٹاک کے پرانے یوٹیوب پہ جا کے شو سن لیجئے گا, وہ سب باتیں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں. اور آج میں ایک چیز پھر پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو بدتمیز عمران خان ہے, یہ قوم کو تو بدتمیز بنا ہی رہا ہے. بھنگڑا پارٹی ہے یہ بدتمیز شخص کی وجہ سے اور لا قانونیت کی وجہ سے. اور اس کی مثال دیتا ہوں, مجھے آپ خود بتائیے, پرائم منسٹر جو ہے ملک کا سب سے بڑا لا ابائڈنگ فگر ہے, یعنی قانون کا جو الٹیمیٹ رکھوالا ہے, وہ پاکستان کا یہ جو نانسنس سسٹم آف پارلیمنٹری, اس کا کون ہے؟ ہیڈ ہے. یعنی کلیئر ہوگی بات آپ لوگوں کو کہ اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ قانون توڑا جاتا ہے, میں بھی آپ کو پروف کرنے لگا, پرائم منسٹر کے لیول پہ اگر قانون توڑا جاتا ہے تو کیا وہی قانون جس طرح وہ توڑ رہا ہے, کیا اس کی ایڈوانٹیج باقی قوم کے لوگ جہاں پھنسے ہوں گے نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل اٹھانا چاہیے, اور ان کے حق میں بھی وہی فیصلہ ہونا چاہیے جو عمران خان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. میں آپ کو مثال دینے لگا, غور سے سنیے گا, اور یہ بھی میں آپ ریکارڈ میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی 2 ریزیڈنسز ہیں اسلام آباد میں, یہ میرے پرانے شوز میں جا کے سن لیجیے گا. ایک تو اس کی اپنی بنے گال ایوری باڈی نوز, اور دوسری کون سی؟ وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہے, وہ جو سی ڈی اے نے جس کے پلان میں تھا کہ وہ ان آتھورائز وہ ایک ہوٹل کے لیے بنی تھی, اور وہاں پہ وہ کیونکہ وہ ڈپلومیٹ انکلیو اوور دے رہا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس, وہ سارے ہائی اس پہ کوئی ہائی اسٹیک وہ لے آئے, ٹیلیسکوپک گنز لے آئے, سم ادر سوفسٹیکیٹڈ ویپن لے آئے, وہ سب لوگوں کو ہاسٹیج بنا سکتا ہے. وہ بلڈنگ اتنی اونچی بننی نہیں چاہیے تھی بگن میں, اور پھر وہ ہوٹل کنورٹ ہو گیا انٹو دیز لیوش فرام 4-5 کروڑ سے لے کے رب جانے ہائیسٹ اماؤنٹ کیا ہے, کتنے نمبر آف اس میں رومز ہیں, اس سے اس کی ہے پرائس ہے. عمران خان نے اس میں اپنے لیے اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو فلیٹ ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ بالکل آن ریکارڈ ہے. عمران خان اس کو پرائم منسٹر نہیں تھا, اسے پتا تھا, اس کے باوجود اس نے وہ لیا, وہ انلیگل تھا ٹو بگن ود. اس انلیگل عمارت میں اس نے وہاں پہ فلیٹ لیا ہے, اور اب سپریم کورٹ نے اس کو ریگولرائز کر دیا. Shame on you, Imran Khan. You should have said, hey, I'm going to become a prime minister. I better not do it because others will also say, hey, اگر اس کا بلڈنگ ریگولرائز ہو سکتی ہے, بنی گالا کو ریگولرائز کرا لیا. پھر اور ثاقب نثار تیرا خانہ خراب ہو, تو نے بہت, اور جاتے ہوئے خانہ خرابی جو کی ہے اس نے ثاقب نثار نے, وہ بھی میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں. تو صاحب, کانسٹیٹیوشن ایونیو کا گھر انلیگل کنسٹرکشن ہے. Right from the get-go, it says that in the papers. آپ چیک کر لیجیے, میری باتوں کو ہمیشہ ویلیڈیٹ کریں آپ. 1, 2, ایک یہ ریگولرائز اور ایک بنی گالا کی ریگولرائز. مگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ون ہیئر, وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہے, اس میں عمران خان نے جو لیا وہ ریگولرائز اس بات سے ہوئی کہ اس میں پرانے ججز کے بھی اپارٹمنٹس ہیں, اس میں منسٹرز کے بھی ہیں, اس میں لا منسٹر کے, یہ جو اس کو پریزنٹ لا منسٹر ہے, وہ بگوڑا کیا نام تھا اس کا, مشرف کا, اس کا وکیل جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ اب لا منسٹر ہے. وہ اٹارنی جنرل کو کیا ایڈوائز کرے گا کہ جس کا اپنا اس میں ہے, اور وہ کہے کہ بھی ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرو, اور اٹارنی جنرل کیسے کرے گا, وہ بھی آن ہز اون کر سکتا ہے. مگر یہ کہاں ہے, یہ گٹ لیس لوگ ہیں اور شیم فل لوگ ہیں یہ لوگ. سو عمران خان نے جب اب دیکھیے, میں کڑی میں لانے لگا ہوں آپ سے, here are the point which you know the dots I'm going to connect for you. جب کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ انلیگل پراپرٹی ریگولرائز ہو گئی, تو اب مجھے بتائیے, یہ جو اپنا پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ ٹائکون ہے ملک, ریاض ملک, اور بیریا ٹاؤن کہیں بھی لاہور میں لے لیں, کہیں لے لیں, اگر عمران خان کی پراپرٹی انلیگل اور اس کو بعد میں لیگلائز کیا گیا ہے,
तो फिर ये मरात उनको क्यों ना मिले? तो पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बन गया ना। नंबर 2, इमरान खान तूने नंबर 2 पाकिस्तान बना दिया है। शेम, नंबर 2 पाकिस्तान बना दिया है। मैं नवाज इसके बारे में कहता था, ये बहुत खतरनाक शख्स है, बहुत, इमरान खान बहुत सेल्फिश इंसान है। इसने पाकिस्तान को एक और ही नहज पे ले गया है बुराइयों की तरफ। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंसल्ट टू इंजरी, वो ये कहता है ये मदीना रियासत, और मदीना रियासत पे भी सुन लें। आप जानते हैं मैं मौलवियों के बारे में कहता हूं कि हमें इस्लाम के नाम पे मत डराओ। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है मैं जब करता हूं। गौर से सुने, किसी को जरूरत नहीं है ये बात इनको कहने की, ये डराते हैं। इमरान खान तो उनको भी हैंड कर गया। उसने मदीना का रियासत का क्या कहकर, पता क्या हुआ? उसके मिनिस्टर्स अब थ्रेट करते हैं कि तुम इस मुल्क में मदीना रियासत नहीं कायम होने दे रहे। जो लोग उनको मेरी तरह के जो वहां पे कुछ हैं, वो जो इस बात में कहते हैं कि भाई ये चीजें ठीक नहीं हो रही, उनको अब डरा रहे हैं। सबसे बड़ा गुंडागर्दी इमरान खान ने शुरू की और ये नहीं चलेगा। इमरान खान को फायर करो आप सब लोग, वो डिजर्व नहीं करता। और ये जो इमरान खान के सपोर्टर्स के बारे में मैं कह रहा था, अगर वो ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी रेगुलाइज तो हो गई। इमरान खान को कह रहे हैं व्हाट्स 4-5 करोड़, भाई 10 करोड़ भी हो, 1 अरब रुपया भी हो, प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए। वो तो पिनेकल ऑफ पावर है और उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस डेकोरम की, ताकि वो ये कहेंगे भी प्राइम मिनिस्टर, वो जो आपको कहा मैं प्राइम मिनिस्टर में रहूंगा, बुलशिट, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा। बेवकूफ बना रहा था उस वक्त भी आप लोगों को। हरामीपन तो ये किया इमरान खान ने। यस, आई एम सेइंग इट so that you are ashamed of why you support Imran Khan. Out of the frying pan into the fire, calling the kettle, calling the pot black. ये है इमरान खान आपका। वो जो अब वो रेगुलराइज अगर हो सकती है तो मलिक रियाज की क्यों नहीं हो सकती, रियाज मलिक की क्यों नहीं हो सकती, और वो बैरियर टाउन की जो जहां कहीं वहां पे क्यों नहीं प्रॉपर्टीज हो सकती, और वो जो लॉन्ड्री के हुए हैं और जहां वो पैसे इन्वेस्ट है वो भी क्यों नहीं रेगुलराइज हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? वो कहेंगे देखें साहब, आपने अगर वहां पे अलाउ किया है तो क्या ये वही केस नहीं है? इनको भी रेगुलाइज कर दें इन प्रॉपर्टीज को जो पाकिस्तान में, वो जो कराची में वो जो लूटी गई, फिर ये हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकेगी कि इमरान खान के हक की बात जो है वो उन्होंने रेगुलराइज कर दी और वो जो दूसरे जो सिटीजन हैं उनके लिए नहीं है? तो क्या चीखो पुकारनी शुरू हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को डबल स्टैंडर्ड्स नहीं बनने पड़े, और बनाएगी तो पाकिस्तान तबाह फॉरएवर। मैंने ये भी बात आपसे कह दी। अगर आपने पाकिस्तान में इंसाफ के जो तरीके, इंसाफ ब्लडी नॉनसेंस, अगर पाकिस्तान में इंसाफ के स्टैंडर्ड ये सेट हो गया कि अमीरों के लिए रिलीफ और तमाम जिनकी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है मॉनेटरली और पॉलिटिकली, दे कैन बी स्लॉटर्ड, फिर मत कहना कि पाकिस्तान में ब्लडी रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ये मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि होगा ऐसे। ये इस वजह से होगा कि इमरान खान जैसे गुंडे और इस्लाम के नाम पर, मदीना रियासत के नाम पर डराने वाला शख्स वो ब्लैकमेल कर रहा है। हाउ डेयर यू इमरान खान, हाउ डेयर यू, स्टॉप टॉकिंग अबाउट मदीना रियासत, इनफ इज इनफ। आप सुन रहे हैं स्ट्रेट टॉक, अ सेगमेंट ऑफ रेडियो प्रदेश। नहीं चलता ऐसे पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान हम बनाएंगे। क्यों वो नैब, पहले तो वो उनके वैसे ही शॉर्टी कार्रवाई है, और फिर वो उनके पास ना अकल है ना उनके पास स्टैंडर्ड्स हैं, और वो करके वो चले जाएंगे। वो जब केस जाके देंगे और वहां जब इन लोग अपील करेंगे, वो कहेंगे साहब अगर इमरान खान को आप रेगुलराइज कर सकते हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं रेगुलराइज हो सकती? फिर क्या आंसर होगा? फिर तो 2 पाकिस्तान, नंबर 2 तो पाकिस्तान हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान की ठीक है और बाकियों की ठीक नहीं है, तो इज दिस द पाकिस्तान, इज दिस द मैन यू वोटेड फॉर? Shame on you if you say yes to it. Studio line 713-974-4000। कौन करेगा आपसे ऐसे स्ट्रेट टॉक? किसी में जुर्रत नहीं है ऐसी बातें करने की। I am fearless and iron man because I speak the truth and I take on these people bare knuckles. Truth gives you courage. It makes you stronger than steel.
Honesty always prevails. And principles, आप bend नहीं हो सकते. You set the wrong standards, everything goes to dogs. मेरे हमवतनों, ये है आपका लूनी टूनी इमरान खान. दोबारा कह दूं, लूनी टूनी इमरान खान ब्लैकमेल कर रहा है अब मदीना रियासत के नाम से. अपनी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की रेगुलराइज करवा ली है, और वो जो इवन बनी गाला की भी. और ये वो इमरान खान है जिसके बारे में मैं आपसे कहा था कि लोधरा के इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर ने से कॉल करके कहा कि तुम वो टाइम खत्म हो गया कन्वेंसिंग का, वहां जाके करोगे तुमको फाइन लग जाएगा. ही स्टिल डिड इट व्हाइल ही वाज नॉट इवन अ प्राइम मिनिस्टर. ये उस वक्त से लॉ तोड़ा है, उसने और भी बहुत लॉ तोड़े. क्या हो रहा है ये? व्हाट इज ऑल दिस? आप मेरे हमवतनों मेरी बात को गौर से सुनो और लेट अस यूनाइट. मैं जानता हूं आपके दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है. मैं कहता था ये फेस चेंज है, ये मैं देखो इमरान खान का मैंने एक एक्ट देख के कह दिया था कि ये फेस चेंज है. अब फेस चेंज की मिसालें बढ़ती चली जा रही हैं एवरी डे. हाँ, ये जरूर है कि ये जो माजी की हुकूमत है नवाज शरीफ की हुई, एक्चुअली इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लेना बेकार है. इट इज नवाज एंड कंपनी, इट इज जरदारी एंड कंपनी, एंड इट इज ऑल्सो इमरान एंड कंपनी. ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये गैंगस्टर्स है. और इमरान खान, ये मैं कहता था ना कि हाफ बेक्ड है. शहबाज शरीफ को इसने वो मुकमुका किया, वो जो ये मुकमुका है. अभी वो सुना ना इसके मुशीर के, इमरान खान के मुशीर ने क्या कहा है जब वो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तो सिलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है. वो पुराने खाकड़ लोग हैं, उनको पता था कि वो इमरान खान को कहां बिठाएंगे. इमरान खान इसलिए कर रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर, ओ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई कैन कम. Hey Imran Khan, don't you forget the days when you were bullshitting on the streets of Pakistan, and then you will not even go to the parliament, and then when your crew was over there, you have the insulting them. You were creating a ruckus. अब तेरी बारी आई है और पार्लियामेंट में शोर मचता है, तेरे लोगों को बाद में वो चले जाते हैं, वो ठीक कर रहे हैं, वो क्यों ना करें? You set the tone then. Now eat your crow, Imran Khan. Eat your crow, Imran Khan. Who are you? पाकिस्तान कल भी था, पाकिस्तान आज भी है मेरे हमवतनों, और पाकिस्तान कल भी रहेगा. इस जैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, मगर तबाही मेरे पाकिस्तानियों के साथ हो रही है. तहरीक इंसाफ कहलाती है. नॉनसेंस. कैसे सपोर्ट करते हो? स्टूडियो लाइन 713-974-4000, 713-974-4000. इमरान खान को जो इसको सपोर्ट करे, मेरी वैलिडेट करें बातें साहब. अगर जिंदगी रही अगले हफ्ते आऊंगा, तैयारी आप भी कर लीजिए और प्रूव कीजिए कि ये बातें फैक्ट नहीं है. और फिर अगर आप इतनी जरा थोड़ी सी और अकल है तो उस अकल को एक्सट्रापोलेट कीजिए और उसके नतीजे देखिए कि क्या होंगे मुल्क के साथ. 713-974-4000 हमारे एक दोस्त एयर आ रहे हैं. भाई साहब आपने जरा फोन को आप ऑफ कर दीजिए. आई मीन नॉट सॉरी, फोन, योर रेडियो फीडबैक. थैंक यू सो मच. वेलकम अबाउट. जी वालेकुम अस्सलाम. हुक्म साईं. सर मैं आपको सलूट करता हूँ. क्या फायदा दिखा रहे हैं तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों को जिनकी आंखों में पर्दे बंधे हुए. जी साईं. मैंने आपको सलूट करने के लिए फोन किया है कि आप जिनको आईना दिखा रही तहरीक इंसाफ वालों को. साहब हकीकत ये है आपके दिल में भी, और लेट्स बी वेरी फेयर, तहरीक इंसाफ वाले जब इमरान खान के साथ जुड़े वो क्या चाह रहे थे? बेहतर पाकिस्तान. वो नया पाकिस्तान वाली तो बीएस है, मगर वो चाह रहे थे कि पहले से जो हमारे साथ हैंड होता आ रहा है अब ना हो. मगर अब इमरान खान भी वही जो फेस चेंज करके कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इंकरेज एम्पावर इमरान खान के सपोर्टर्स को कर रहा हूं कि लुक फॉर अनदर मैन, जो विच आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग.
بالکل سر یہ مسئلہ ہے. ایکچولی میں بات یہ ہے کہ عمران خان نے اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنا وہ کیا, اور آپ اگر اس کے ابھی 6 مہینے کے ٹائم فریم دیں گے تو پاکستان کو بس سے بدتر کی طرف وہ لیں گے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آج بھی رہنے, کل بھی رہنے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک قائم ہو جائیں. Amen to that. کتنے لوگ آئے ہیں پاکستان میں کھا کے چلے گئے, لیکن پاکستان اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت تک قائم و دائم رہے گا. Inshallah. کیونکہ سپورٹروں کو صرف یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھیں جو ہو رہے جو غلط ہے. میں آپ سے سچی بات کروں گا, میں نواز شریف کے سپورٹر ہوں, لیکن جہاں نواز شریف نے بھی غلط کیا, ہمیں کم از کم اتنا ہم نے وہ ہے کہ ہم اس کو بھی غلط کہیں گے. جو وہ صحیح کام کیا ہم اس کو صحیح کام. صاحب آپ سے آپ نے اچھی بات کی ہے. یو آر این آنیسٹ پرسن. آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ یو آن سم ادر ٹریک ہیئر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اب بھی نواز شریف کے سپورٹر ہیں, یس اور نو؟ یس سر, کیونکہ میں اس میں پہلے میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جس میں ایسے نبی جس کو سپورٹ کرے. جی مجھے بتائیے وہ کیا ریزنس ہیں تاکہ میں بھی اپنی عقل کو بڑھا سکوں. تو پہلی بات آپ دیکھیں جو الیکشن سے 6 مہینے سال کے اندر جو ہوا, جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب تھے, جو ایک پرسنالٹی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو اگر سپریم کورٹ سے اندھا تالا لگا کے گئے. Alright, that's point number 1. Point number 2. پوائنٹ نمبر 2 کہ جس طرح الیکشن سے پہلے خالی ایک پارٹی کو ٹارگیٹ کرنا, تو آپ نے صرف اس بات کے جواب دے دیں کہ پاکستان میں خالی ایک پارٹی کے رابطے, خالی نواز شریف, شہباز شریف اور خالی پی ایم ایل کے لوگ کے رابطے الیکشن سے 3 مہینے پہلے کیسز کھولے جا رہے اور خالی انہیں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا صاحب یہ تو چلیں. پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 اب ذرا آپ اس کو اپنی لائن کو ڈیفینڈ کریے پلیز. پوائنٹ نمبر 3 if you have. پوائنٹ نمبر 3 میرے پاس یہ ہے کہ ایسے میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ آرمی, پاکستان آرمی کو بھی سلوٹ. پاکستان آرمی ہم جوانوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن کیا نواز شریف کو پاکستان آرمی نے بنایا تھا, یس اور نو؟ نو. ہاؤ از دیٹ؟ مارشل لا کے درمیان کس مارشل لا میں نواز شریف پہلی دفعہ کچھ بنا؟ جی یہی بات میں آپ کی سپورٹ کرتا ہوں. پاکستان نواز شریف نے شروع میں آرمی کو سپورٹ کیا, اور نواز. رک جائیے, سپورٹ کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی نظر میں صاحب میرا کوشچن معذرت کے ساتھ دوست, معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیے, آپ کی نظر میں مارشل لا از اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ مارشل لا از اے بیڈ. آلرائٹ, سو پھر نواز شریف وہ جو ایکٹ اس نے اس کے ساتھ مل کے کیا, واز دیٹ in your view that you are, then please don't insult common sense of my listeners as well, کہ اگر مارشل لا گورنمنٹ غلط ہے تو پھر نواز شریف بھی غلط تھا. نواز شریف غلط تھا شروع میں. اوکے اسٹاپ رائٹ دیئر, اسٹاپ رائٹ. اب دیکھیں بات سنیں بھائی صاحب, اب آپ کا سٹینڈرڈ کہ نواز شریف کتنا سچا تھا, نواز شریف گیٹ گو سے اگر کی بات نہیں ہے, آئی ایم ویری کلیئر آن دس ایشو کہ مارشل لا از این انسلٹ ٹو پاکستان. دوبارہ کہتا ہوں, نہیں اگر صحیح بات ہے تو پھر آپ نواز شریف کے سپورٹر نہیں ہو سکتے تھے اس بات پہ. آپ ملک کے بھی اسی طرح ہی دشمن ہیں. سن لیجئے میری بات آپ پلیز, آپ بھی اسی طرح دشمن ہیں. پہلی بات یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے, یہ نواز اینڈ کمپنی ہے. شرم آنی چاہیے. معذرت کے ساتھ آپ آن ایئر ہیں, مگر آئی ڈونٹ نو کہ کہاں آپ یو ول پارٹ ویز ود. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سرما لگ رہا ہے عمران خان کے سپورٹرز میں, تو آپ بھی سرما آج لگوا لیجئے مجھ سے. ارے واہ واہ واہ, بہت خوب بات کی. اپنی باری آئی دوست. بہت خوب دوست, آپ کو میں نے آف ایئر نہیں کیا. دوستو آپ نے ہپوکریسی دیکھی ہے شخص کی, آپ نے ہپوکریسی دیکھی ہے. دا مومنٹ ویری فیئر اینڈ اسکوئر کوشچن ہے, مجھے میرے اوپر اٹیک پہ آ گئے کہ میں جو ایز اے اینکر کر رہا ہے. بھائی میں اینکر نہیں ہوں, میں شیڈو پرائم منسٹر ہوں. آئی ایم مور دین این اینالسٹ. آئی ایم مور پلس ان مینی ایریاز. جہاں میں نے آپ کو آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا, آپ نے اٹیک مجھ پہ آ گئے. گرو اپ صاحب, ایسے نہیں پاکستان بنتا. وہ کیا کہتے ہیں, سرما آپ لگوانے آئے تھے ان کی طرف سے, آپ خوش ہو رہے تھے. نواز شریف کی حرکتیں اب آپ کو گناتا ہوں تاکہ آپ کی بھی طبیعت ذرا صاف ہو جائے کہ آپ نواز شریف کے بھی جو سپورٹرز ہیں وہ کتنے گندے سپورٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں.
आप लोग अमेरिका में रहते हैं और आप लोग डेमोक्रेसी की, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है, उसके मजे लूट रहे हैं और हिपोक्रेट हैं कि जब पाकिस्तान की बारी आती है सिर्फ लफ्जी बातें करते हैं। अब जो आपके जो पीर का जो ऑपोजिट है उसको आप आ जाते हैं कि हाँ इसकी धुलाई करो। जहां अपने बंदे की धुलाई की बात आई वहां पे आप कैसे गिरगट की तरह रंग बदल गए। क्या बात है साहब। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनता। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी फिर पुरानी बातों पे चले जाइए कि पार्टी सपोर्टर्स आर एनिमीज ऑफ द कंट्री। साहब असूल बनाइए जिंदगी में, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, एक क्राइटेरिया रखिए कि प्रिंसिपल ये है और जो भी उस प्रिंसिपल के उसको खराब करेगा वो बिल्कुल साफ इंसान नहीं। हमारे दोस्त कॉल कर रहे हैं, परहैप्स दिस मे बी द लास्ट कॉल ऑफ द ईयर। दोस्त आप इसको सुन रहे हैं स्ट्रेट टॉक, नदीम नाइक स्ट्रेट टॉक, सेगमेंट ऑफ रेडियो परदेश। थैंक यू फॉर कॉलिंग साहब, आप ऑन एयर हैं। जी साईं आप ऑन एयर। अच्छा, तो भाई मैं ये चाहूंगा कि जो 3 पार्टी मेरे ख्याल में है पाकिस्तान में, साहब इनको पार्टीज मत कहें, ये हैं एंड कंपनी। जी हुक्म। हाँ जो भी है, मैं ये चाहूंगा कि ये आखिरी जो आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम रही है उसमें तीनों पार्टियों को जरा डिस्क्राइब करके और बता दीजिए कि किसने क्या क्या गलत किया। जो इमरान खान को समझे अभी जो भी वो कर रहा है, लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी हो गई, जमात इस्लामी हो गई और वो अपना ये नून लीग हो गई, मुझे खाली 3 सॉलिड पॉइंट चाहिए। जी मैं सुन रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप, एक जो आम जनता है, एक आम पब्लिक है, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिक्स वगैरह समझ में नहीं आती, कि आपका जो शो एक आम आदमी सुन रहा है, एक जो बिल्कुल जिसको इन सब चीजों की मतलब कोई नॉलेज ही नहीं, वो आपका प्रोग्राम सुनना किस तरह शुरू करे कल से और अच्छे से, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, क्योंकि वो जो भाई आए थे वो नवाज शरीफ के फेवर थे। 1-2 लोग और कॉल करेंगे, वो दूसरे लोगों के फेवर में होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि मतलब थोड़ा सा इससे तबसरा करके ना इसको आज एंड कीजिए और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्त आपके कॉल करने का, बड़े अच्छे आपने सवाल किए। थैंक यू, गुड पॉइंटर्स टू गो विद यार। अब 9 मिनट रह गए हैं, 11:51 ऑन द डिजिटल क्लॉक ऑफ द स्टूडियोज। खुद से मैं दरिया बंद करने की कोशिश करता हूँ। वैसे बाय द वे माय आंसर्स इन लेंथ आर, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। अब यूट्यूब पे जरा शुरू करें रिवाइंड करने प्रोग्राम्स 1 बाय 1, उसमें आपको तीनों पार्टीज के बारे में जो मैं कहता आ रहा हूँ, पार्टीज नहीं है ये, एंड कंपनी है। लेट्स बिगिन विद अब उसमें जो उनके डीपर पॉइंट्स हैं वो आपको अब इंशाल्लाह फिर अगेन अनफोल्ड करता चला जाऊंगा। बट बाय द वे आई एम ऑन रिकॉर्ड फॉर ऑल दीस हियर। पहले शुरू हो जाते हैं हम अपनी से। एक आप गौर कीजिएगा मेरी बात में, बहुत अरसे से कह रहा हूं, लोग उसको उसके डेप्थ चार्ज में नहीं देख रहे। सबसे एक पार्टी है जिसका हर पार्टी के साथ जिक्र होता है और बदनाम किया जाता है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। Pakistan military is the world's finest and I respect and I salute them and we all do. होता क्या है, जब पाकिस्तान आर्मी मार्शल लॉ लगाती है, it becomes and it has been a political party with guns. याद रखिए मेरी बात को, political party with guns. Only legal जिनको है कि guns कैरी कर सकते हैं, और वो है पाकिस्तान आर्मी। अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये अब सब एंड कंपनीज हैं। क्यों? देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो को उसी वक्त हमें सबको, वैसे आई एम सॉरी, he got killed, he got murdered, my sympathies for that family, I have respect for that। मगर मुर्दे को बार बार ये जिस तरह पीपल ये अपनी जद्दारियन कंपनी उसको खड़ा करते हैं वोट लेने के लिए, वो नाजायज बात है, वो शर्मनाक बात है, सिंपैथी वोट लेने के लिए। जुल्फकार अली भुट्टो को बिल्कुल हक नहीं पहुंचता था कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बने। वो पहली असूलन बात गलत हो चुकी थी।
उसके बाद जो भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने वो जो नेशनलाइजेशन की वाज अ टोटल डिजास्टर, हिस्ट्री हैज प्रूवन इट, और वो टोटल एक्सप्लॉयटेशन थी। अब आ जाइए, अब डिटेल में और इनके क्या है, फिर आ जाइए, पहले अभी जरदारी एंड कंपनी पे रहता हूं। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर का क्या हक था कि वो भुट्टो एंड कंपनी को लीड करे? ये बदअखलाकी है पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के लिए एक्सप्लॉयटेशन है, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। गौर करिए मेरी बात पे, ये एंड कंपनीज हैं। तो क्या हुआ? बेनजीर आ गई। अगेन माय हार्ट ब्लीड्स विद सॉरो, जो उसके साथ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। लियाकत बाद में 2 बंदे पाकिस्तान की हिस्ट्री में उड़ाए गए, बहुत ज्यादती हुई है, मगर उसका भी ये लोग जरदारी एंड कंपनी जनाजा लेके फिर आते हैं इलेक्शन वोट के जमाने में। दैट्स नॉट प्रॉपर, दैट्स नॉट राइट। I personally think it is insult to those great leaders. वो ग्रेट किस तरह है वो भी मैं किसी दिन उसको भी एंगल आपको थोड़ा सा दूंगा, क्योंकि यू नो दे ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स फॉर पाकिस्तान। सो बेनजीर का कोई हक नहीं था, मगर पीपल्स जो उसके उन्होंने जो सो कॉल्ड भुट्टो एंड कंपनी बनी, उसमें लोग उनके साथ लगे रहे विदाउट हेडलेस, कुछ पता नहीं है, बेड़ चाल पाइट पेपर आएगा जा रहा है, पीछे कौम हल्लड़ कौम है पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? उसके बाद जरदारी एंड कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। कैसे हुई वो सब जानते हैं, क्यों हुई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। क्यों नहीं हमारी ये जो एंड कंपनीज हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अब हम बनाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसमें डायनेस्टिक रूल कोई नहीं होगा। ये सुरमा लगना चाहिए पाकिस्तान की कौम को। इंसल्टिंग है कि ये लोग कहते हैं कि जी हम उस पार्टी के साथ हैं, और जो पार्टीज नहीं है उनमें तो अकल की कमी मैं कहूंगा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, बट आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट इन योर फेस। तो उसकी वजह से खाना खराब हुआ है, क्योंकि नया ब्लड अवाम की तरफ से मिलके आए, मेरिट्स पे आए, फिर होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान का बैंकरप्ट सिस्टम है। It needs to be changed. It should be right on the lines as in America is. और मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद की वजह से हम वहां पे इंस्टीट्यूट करेंगे। So अब आगे बिलावल आ गया, बिलावल की कल बहनें भी आ जाएंगी। दिस इज जरदारी एंड कंपनी, और जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं अंधे हैं, बहरे हैं। पाकिस्तान के उस जमाने में सिंध की जो हालत है उसका ब्लेम कौन लेगा? वर्ल्ड क्लास पोर्ट होने की बजाय वर्ल्ड क्लास डंपस्टर बना हुआ है कराची। और वहां के जो चीफ जस्टिस हैं, जो फ्यूचर के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जज गुलजार साहब, नॉट चीफ जस्टिस बट आई थिंक इज जस्ट अ जज इन सिंध प्रोविंस। उसने वो जो वहां पे डिमोलिश करने के लिए सबको कह दिया है, वो कल जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, और मैं खोसा साहब से अपील करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे इमरान खान को उड़ाया जाए, क्योंकि जब ये सब आएंगे, गुलजार साहब जब बने, तो जिस तरह इन्होंने अब कराची में हुक्म दे दिया कि सबकी वो बिल्डिंगें उड़ा दो और पार्क वापस लो, उसी तरह ये फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 भी जाएगी। सो अब बेहतर है कि हम उसको पहले ही बुरे कामों को, गलत कामों को रोक लें। सो पीपल्स पार्टी ने वहां पे जरदारी एंड कंपनी ने क्या किया? कोई प्रोग्रेस नहीं है। और सारे किस्से कहानियां जो भी आ रही हैं वो प्रूव होंगी उसमें गलत पैसे किस तरह क्या क्या हुए, तो उसकी वजह से वहां का प्रॉब्लम देखें, लोग फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं। अंधे, बहरे और मुल्क दुश्मन। अब आ जाइए इधर नवाज एंड कंपनी को। नवाज एंड कंपनी ने पिछले 3 साल में अपनी बजट परफॉर्मेंस जो थी रिपोर्ट वो पेश ही नहीं हुई, जिसको अब इमरान खान की बेवकूफी की वजह से, कम अकली की हैफ बेक्ट होने की वजह से शहबाज शरीफ को उन्होंने पार्लियामेंट में उस पार्टी का बना दिया, सरबराह बना दिया उस कमेटी का। व्हाट नॉनसेंस। अब वो गले में आ गया है मछली का कांटा इमरान खान। अब सोचता मैं करूंगा क्या, और उसका वो एक मुशीर धमकी देता है कि हम तुम्हारा वो जो है ना प्रोडक्शन उसको मंसूख कराते हैं। तो क्या मुका हुआ था ना, फिर यही हुआ है ना। अब क्यों करोगे? क्योंकि उसने इमरान खान को वहां पे जब वो आया है ऑलमोस्ट 5वें महीने में, और आके वो बैठ गया, और वो हाथ में जो पता नहीं वो क्या पढ़ रहा था, हाथ में उसके तस्बीह थी। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, वो इस 3 मिनट रह गए, चलो बाकी यार कैरी ऑन। वैसे साहब भाई साहब जिन्होंने कॉल किया, रिस्पेक्ट दैट,
बड़े वैलिड एंड फेयर क्वेश्चन है, पर यार बात ये है कि ये क्वेश्चन नए लिसनर्स के लिए ऑलवेज उठेगा कि मेरी ये जो स्लांट है ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो जो मैं आप लोगों को एक एनालिसिस पेश करता हूँ वो फिर हर दफा हो जाएगा यार उनके लिए भी बताओ, तो फिर ऐसे करेंगे आप मेरे स्ट्रेट टॉक के जो यूट्यूब पे शोज अवेलेबल हैं उनको जाके सुनते रहे, उनमें आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। तो सब होता क्या है, सब होता क्या है, 2 मिनट रह गया, कि आप जब इस किस्म का एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल है। मुझे ये बताइए, आई डोंट केयर कि बाहर दुनिया में अगर जहां के भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां क्या होता है, मुझे कोई सरोकार नहीं, मगर मुझे पाकिस्तान से है। ये कैसे होता है कि जब इलेक्शन आते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह अभी इलेक्ट होते हैं, मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, मिनिस्टर्स नहीं इलेक्ट होते, पार्टी के लोग इलेक्ट होते हैं, सो कॉल्ड एंड कंपनीज के, वो लोग पूरी गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और वो कोई जो डिजर्व नहीं करते वो लोग उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने होते हैं। रॉन्ग सिस्टम, रॉन्ग सिस्टम। इनमें किसी में जरूरत नहीं है उसे चेंज करने की। नदीम नाइक करेगा सब। 11:59 ऑन द क्लॉक, टाइम टू गो। लव यू लव यू लव यू। आप लोगों के साथ गपशप रहेगी, विजिट कीजिएगा, रिविजिट कीजिएगा, और जो मैंने आज प्रिडिक्ट किया इमरान खान के बारे में कीजिएगा, एंड आई विल टॉक मोर ऑन दैट सब्जेक्ट। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। सेगमेंट ऑफ रेडियो प्रदेश से स्ट्रेट टॉक, नदीम नाइक स्ट्रेट टॉक, और हमारे ग्रेट स्पॉन्सर्स हैं स्टर्लिंग मैकॉल, टोयोटा, शायद उस्मान 7132703900, गुलशन स्वीट 7377277860, ऑसम ट्रैवल 832-742-4444, Chikhara Grill 281988-7141, Affordable Fine Furniture 7134500025, Baba Jewelers 713-952-5858, Mumtaz Zaman Insurance 2813136160, US Wholesalers on 88 Harvey. सब मिलके कहें, and loud and clear, and say it with full emotions, and say Pakistan Zindabad, and one more time, Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Hello, hello.